Citizenship Amendment Act of 2019 has finally been implemented. अब ये होता क्या है और मोर इम्पोर्टेंटली हमको एज क्लैट एंड एलिट एस्पिरेंट्स पढ़ना क्या है. So let's start off from the very beginning. Firstly, we will understand what are the laws with respect to citizenship in India, and finally we will talk about the amendment and what will be its repercussions. So let's start off with the very first thing, which is the citizenship laws. Now, if I talk about the Constitution, Part 2 of the Constitution of our country, it deals with citizenship laws. अब उस जमाने में क्या था कि पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान में से कोई इंडिया में आएगा, उसको कैसे मिलेगी सिटीजनशिप, इंडिया में से पाकिस्तान जाने वाले को कैसे मिलेगी. कुछ इस तरीके से provisions were there in part 2 of the Constitution. At that time we couldn't really contemplate other scenarios, but yes, by virtue of Article 11 of the Constitution, हमने ये authority Parliament of our country को दे दी that apart from the laws that are there in the part 2 of the Constitution, if there is a need, kindly make those laws. And so hence our Parliament made the Citizenship Act of 1955. अब पहली बात तो अमेंडमेंट इस एक्ट में हुई है, नई एक्ट नहीं बनी है. So there are 5 ways to gain citizenship and 3 ways to lose citizenship in this particular act. Let's start off with the first one. The first being birth. जैसे I think all of us are included in this. बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ है, मम्मी पापा दोनों इंडियंस है, बच्चा इंडियन हो गया. डिसेंट, बच्चे का इंडियन ओरिजिन है, पैदाइश कहीं और है. So the kid was born in let's say the United States of America. मम्मी पापा नानू नानी दादा दादी में से कोई एक used to be an Indian citizen or is an Indian citizen. The way that child will become a citizen is by descent. Registration, well, for example, if you get married to a foreigner, how will that foreigner become an Indian citizen? Those provisions are there under registration, amongst other provisions. Naturalization is pure absolute शुद्ध फॉरेनर. ना इस फॉरेनर का कोई इंडियन ओरिजिन है, ना किसी इंडियन से शादी हुई है, इंडिया से लेना देना ही नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल रियाना को अगर हमने इंडियन सिटीजन बनाना है, द प्रोविजंस दैट विल बी यूटिलाइज्ड विल बी अंडर naturalization. And finally, incorporation of another territory. Goa, Sikkim, Puducherry, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, all of them were not always a part of India. They were made to be a part of India through peaceful circumstances, but they were made a part of India. अब उन जगहों में how do you give citizenship to people? That will be decided by the government of India, and those are the provisions. So if you make another territory a part of India, how do we give them citizenship? All of these are those 5 ways to gain citizenship. Then we have 3 ways to lose citizenship. Let's start off with the first one, which is renunciation. Not everyone can do this, because what is this? It says, I don't want to be an Indian citizen. I don't have citizenship of another country yet, but I don't want to be an Indian citizen. M.F. Hussain ने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया था, renunciation to, let go of his citizenship. अच्छा, आधे से ज्यादा जनता टर्मिनेशन के अंदर आती है. I will first acquire the citizenship of Canada, being a Punjabi, and as a result of that, my Indian citizenship will be terminated. That's the difference. So, इधर क्या है? I haven't gained the citizenship or obtained the citizenship of another. I've just given up Indian citizenship because I've quite frankly had it with India, or whatever is the reason. Termination is I have obtained the citizenship of another country, and as a consequence of that, my Indian citizenship has been terminated. Then comes deprivation, deprive करना citizenship. कुछ गंदा ही काम किया होगा. Maybe you would have obtained citizenship by fraud. Maybe you are disloyal to the constitution. Maybe you have resided outside without any reason for a continuous period of 7 years. Maybe you've communicated with an enemy alien. तो ऐसी कुछ circumstances जहाँ पे तुमने काफी बेकार का काम किया है, अगर ऐसा हुआ तो आपसे आपकी citizenship deprive हो जाएगी. अब इस एक्ट में बहुत बार अमेंडमेंट्स हुई, 2019 में भी अमेंडमेंट हुई. अब लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट. जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया, I'd like to talk about 2 things. The first thing that I'd like to talk about is this term called minority. Well, guys, in our country, as per Article 30, minority is identified on the basis of 2 things. One is religion and the second is language. Of course, population is a criteria, but population can't be the only criteria to identify a minority.
अदरवाइज गर्ल्स विल बी माइनॉरिटीज एक जगह बॉयज एक जगह, ट्रांसजेंडर्स एक जगह, होमोसेक्सुअल्स एक जगह, हिंदू हर जगह अलग अलग हो जाएगा. So population yes, but on the basis of language or religion. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 ऐसी जगह है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जहाँ पे रिलीजियस अत्याचार, रिलीजियस परसिक्यूशन होता था. अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मेजॉरिटी कौन सी है? मुस्लिम. हेंस परसिक्यूशन किसके साथ हुआ? माइनॉरिटीज के साथ. ये एक टाइप का नोशन है जिसके ऊपर ये अमेंडमेंट पड़ी हुई है. नोशन इन द सेंस दैट the idea is that in a majority area only the minorities face persecution. चलो ठीक है, whatever be the case. So religious persecution वैसे हुआ भी है हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट के साथ. एंड सो इन्हीं 6 रिलीजन्स या रिलीजियस माइनॉरिटीज को इसमें बेनिफिट मिला है. सो लेट्स ट्राई टू डू दिस. हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, 6 religious minorities from which places? From 3 countries which are Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. Now what have they done? They were being religiously persecuted, so to save their lives they have come into India, and they have come into India illegally. ये अमेंडमेंट लीगल माइग्रेंट्स के लिए नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि लीगल माइग्रेंट्स तो वैसे ही सिटीजन बन सकते हैं, उनके लिए अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत है? ये तो इलीगली आए हैं अपनी जान बचा के, क्योंकि धार्मिक अत्याचार हो रहा था इनके साथ. अच्छा, कब आए हैं? दे हैव अराइव्ड ऑन और बिफोर 31st December 2014. दे आर ऑलरेडी हियर. दे आर नॉट कमिंग टुडे. ये ऑलरेडी आए हैं, इलीगली आए हैं, अपनी जान बचा के आए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से. अब इनको देनी है सिटीजनशिप. दैट इज व्हाट द अमेंडमेंट वाज ऑल अबाउट. एंड वैसे अगर हम बात करें नेचुरलाइजेशन के अंदर जो अभी हमने किया था, यू नो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू बिकम अ सिटीजन अंडर दिस? 12 years. एंड यू नो हाउ मच टाइम विल दे टेक? 6 years. क्योंकि बेटा ऑलरेडी दे आर हियर, जान बचा के अपने यहाँ पे आए हैं. 2 चीज़ें कर सकते थे, या वापस भेज देते. वापस भेजने का मतलब ही नहीं है. द पीपल हु, आई मीन, देयर लाइव्स आर एट स्टेक. यू कांट बी लाइक, oh sorry, no area for you, go back, die. Can't do that, right? So what is the next thing that you can do? Okay, maybe you can put them in jails. We don't have that much place, right? And so hence we make them citizens. They are anyway staying here, utilizing our resources. Let them use it legitimately. Let them pay taxes. सरकार को भी कुछ पैसा मिल जाएगा उस चीज में, right? So that is what this particular amendment is all about. Now, what are the issues that people have with respect to this amendment? देखो, पहले तो ये religious persecution की बात कर ली, identification of minorities under Article 30 की बात कर ली. अच्छा, पहली बार है कि धर्म का नाम लिया गया है. बेटा धर्म नहीं, माइनॉरिटी बोलो, है ना मैम? आप तो बात तोड़ मरोड़ रहे हो. बेटा दैट इज द फील्ड ऑफ लॉ. दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग इन, राइट? लॉ इज अबाउट व्हाट इज लीगल और what is not legal. It is not about what is ethical or not ethical. Ethical वाली चीज आपकी subjectivity. यहाँ पे धर्म बोलो ही मत, religious minority बोलो, right? So that is what has been utilized over here. Now the issues that people faced was, the very first one was, how do you identify these illegal migrants? तभी तो rules बने हैं. और बोला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिसर बैठा होगा, उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने बोल दिए, कहते ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे देना. और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के अंदर सिटीजन्स बनते हैं इंडिया में, they also have to take an oath of allegiance to the constitution, by the way, right? You and I, we didn't have to do that. Why? Because I was born here, my mama papa are Indian citizens. It is presumed that I have given an oath of allegiance to the constitution. But Rihanna wants to become an Indian citizen. I don't know why would she, but chalo jo bhi hai, right? If she wants to become an Indian citizen, then she has to give an oath that she is going to abide by the constitution. In case she doesn't, we will take away her citizenship. बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये भी होगा, ये भी उन लोगों को करना पड़ेगा. बट बॉस जो इलीगली आया है उसका प्रूफ क्या? हाउ डू यू प्रूव वो कौन से दिन आया था? आपने तो बोला 31 मार्च 2014, क्या पता वो 1 अप्रैल 2015 को आया हो, उसने झूठ बोल दिया हो. डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास है ही नहीं. हियर से एविडेंस होगा, बिकॉज दैट पीपल अराउंड देम विल बी लाइक नहीं 2014 से पहले आया था.
right? How would you prove religion? How do you, I mean, religion इधर लिखा तो होता नहीं है. So maybe I don't know what kind of provisions will be utilized to ensure that yes, this person is in fact a Hindu, Sikh, Christian, Parsi, Jain, Buddhist, right? How would you know the country of origin? Maybe here you can go back to that country, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, and be like, oh, did this person stay here? And that country will be like, this guy did stay here and he faced religious persecution. I don't think any country would want to say that, but well, let's see. And is why only these three countries is the second question. क्योंकि यार रोहिंग्या मुस्लिम के साथ तो म्यांमार में भी प्रॉब्लम हुई थी, उनको तो बुद्धिस्ट ने मारा था, तो उनको भी आप करो. अच्छा, इसका उत्तर जो है ये एक लीगल क्वेश्चन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का क्वेश्चन है. सो फॉर एग्जांपल इन अ क्लास देयर आर 5 स्टूडेंट्स एंड देयर आर ओनली 2 minutes left and all 5 students want me to answer their doubts and I could only answer the doubts of 2 students because of paucity of time. Am I being discriminatory? No. You may not like the fact that I chose 2 students over the others, but you can't say that I'm doing something illegal. So the government hasn't said that it will not help the others. They've just said that they're going to start off with them, right? And logic behind the cutoff date, like why is it 31st December 2014? Like why can't it be anything else? Well, there are documented evidence कि 31st December 2014 से पहले ये बहुत सारे धार्मिक अत्याचार हुए थे, तो जाके लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इंडिया में प्रवेश किया था. ठीक है जी. So this is what is in news. Like, I don't know whether you'll find it funny or not, but in the government of Assam, a notification has been put out that nobody can protest against CAA because Assam में ही ये पूरी चीज शुरू हुई थी through this historic document called the Assam Accord of 1985. ठीक है, तो क्यों असम में ये बात हुई, 1985 का अकॉर्ड क्या था? We will probably do this in another video lecture where we will also discuss the National Register of Citizens. Well, that is it from my end. If you like this video, kindly like the video and subscribe to our channel, and we will keep coming back with such informative videos. Thank you very much.